All right. If you have the access, you can start the recording and the voice recording as well. Done? Okay, beta. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, I need to tell you that you can identify now where is Pakistan. Okay? With Pakistan, you can see about four directly neighboring countries like China, India, Afghanistan, and Iran. All right? Kindly keep responding. Okay. So, beta, you can also see in 1940 from 1947 till 2025, location of Pakistan remains the same, and definitely a country never moves, right? But what changes is the ground realities. जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ इसको समझने की जरूरत है गॉट इट ठीक है now if a common student would write the answer you might be writing this answer what are the neighboring countries of Pakistan so in the northeast we have China in the east we have India in the west we have Afghanistan in the southwest we have Iran and in the south we have Arabian Sea that's it. But that's what a common student does. IGCSE and O-level student, they answer it with a reason. This makes the examiner really happy. And now it's the way. Like, listen to my words very, very carefully. If you would write the answer, Fatima, quality student, you would write this that in the northeast and the east, Pakistan is bordering with two most rapidly growing economies of the world, China and India. Do you understand what I have said? मतलब ये है bordering two gigantic economies of the world, and there is no doubt that China and India are as competitive economies as anything. And by being their neighbor, Pakistan can take a certain amount of advantage being the part of it. All right. Now turning towards the other side, Pakistan's western borders mostly lie and connected with Afghanistan. What's so special with Afghanistan? Afghanistan is the land, unfortunately, associated with the drug trafficking and terrorism. And Pakistan, since it is the with Iran, it is the only country which can give Afghanistan the access to the Arabian Sea. So Pakistan's importance to stop the traveling of the drugs as well as the cross-border terrorism. Pakistan is actually working as a frontline state, and it's not only working as a frontline state; it is facing a lot of problem. And being a Pakistani, Fatma, you must be aware of all these things, right? So this gave Pakistan an strategic position. Every superpower, every world power is looking into Pakistan as a land of challenges and the opportunities at the same time. On the other hand, Pakistan is bordering in the southwest with Iran. Iran is a country which is having the second largest gas and fifth largest oil reservoirs in the world, arguably. Just imagine about Pakistan importance working as a transit zone. So many countries can use Pakistan to reach the Arabian Sea quickly, and so many countries can use Pakistan as far as they need to reach the cheaper energy resources of Iran. So this is what makes Pakistan so sweet for many countries, even for India. Even India is looking at us many times as the land of opportunities, but unfortunately, the situation of both the countries, it really didn't help. All right. ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा एस्पेक्ट से अलग करके थोड़ा सा समझाता हूँ एक मिसाल छोटी छोटी चीजें अब पीसेस में समझाना शुरू करते हैं आई हैव जस्ट टर्न ऑन द एनिमेशन एक मिनट मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड सॉरी थोड़ा सा मैप मैंने बड़ा कर लिया आपके सामने ये थोड़ा ब्लर हो गया बेटा लेकिन ये अभी भी समझाया जा सकता है इसमें ठीक है
ये जो शहर है ये टिक कर दिया मैंने, दिस इज क्वेटा। ऑल राइट। फ्रॉम देयर इज अ हाईवे, it starts, it moves through Iran. The name of the highway, you are recording it, that's a good thing. The name of the highway is RCD highway. All right. Now, after doing this, अब मैं मैप को छोटा कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए, this RCD highway starts from Quetta, moving by Iran, and it is reaching Turkey, the city of Istanbul. ठीक है, and why Turkey? It may enter Europe. So पाकिस्तान से यूरोप आप डायरेक्ट bilateral trade कर सकते हो, that side and that side, both sides. Are you getting it? So just imagine कि अगर यही लाइन चाइना यूज कर ले एज अ शॉर्टर रूट, ठीक है, तो उसको कितना फायदा। अभी हम सी पैक नहीं पढ़ रहे, ठीक है, सी पैक पे मैं भी आता हूँ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे। But just imagine if China might be able to use it and it can transport directly through Europe. ठीक है? How much money Pakistan can easily earn either way. Both sides can travel from Pakistan. Now, India is a rapidly growing economy as well. आप ये देखो इंडिया का ये एरिया काफी खाली है, ये एरिया भी काफी खाली है, लीस्ट डेवलप्ड। इस एरिया की इकोनॉमी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाकर अगर ये वाई ट्रेन या वाई रोड वन वे दी अदर यहाँ से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, इंडिया कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ से इंडिया अपनी चीजों को भिजवा सकता है एंड इंडिया कैन रियली अर्न इन क्वाइट अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ। अग्रीड? ठीक है। ये है आरसीडी हाईवे, वन हाईवेज अपॉर्चुनिटी। दिस हाईवे वाज बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड इन द टाइम ऑफ अयूब खान and completed in the time of Zulfikar Ali Bhutto. RCD stands for Regional Cooperation for Development. It was an organization of where consists of Pakistan, Iran, and Turkey at that time. Right now, it is known as ECO, Economic Cooperation Organization. At that time, it was having 3 members. Now it is having 10 members. Even Afghanistan is also included into it. तो जस्ट इमेजिन इफ इंडिया वुड ज्वाइन। एक छोटी सी बात करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान आर ऑलवेज एट वॉर, जंग होती रहती है ना दोनों में, राइट। So Fatma beta, if Pakistan, even India wanted, India once offered that we can build a track till Quetta, please connect us to Iran and Turkey, so and we will pay you as well. So India अगर अपनी डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान को यूटिलाइज करता, पाकिस्तान would be working as a transit for Indian trade. So many hundreds of millions of dollars are coming to India every month. तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और सबको जब पाकिस्तान से प्रॉफिट मिल रहा होता, why would they destroy Pakistan? The enmity might go down. Am I right or wrong? तो पीस हो जाता और बहुत सारी चीजें सही हो जाती। अब एक और ऑप्शन देखते हैं, वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। इसको भी समझ ले। ईरान ने ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के ये तफ्तान बॉर्डर से कनेक्ट कर दी। अनफॉर्चुनेटली 2018 में ईरान हैज कनेक्टेड इट एंड पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू स्टार्ट इट एज येट। इसमें दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पे फाइन भी लगाना है, बट ईरान इज नॉट सो फार आस्किंग पाकिस्तान टू डू सो। अंडर अमेरिकन प्रेशर पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इट। अगर ये पाइपलाइन बनती है तो ये पाइपलाइन जाएगी ऐसे चाइना तक, बिकॉज चाइना वांटेड दी चीपर गैस रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, बिकॉज चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना को अनएंडिंग रिसोर्सेज चाहिए एनर्जी के। अग्रीड? ठीक है बच्चों। अब अनएंडिंग रिसोर्सेज वंस चाइना नीड्स, तो चाइना इसको चाहता है कि पाकिस्तान शुड बिल्ड इट, बट पाकिस्तान इज हेजिटेटिंग ड्यू टू अमेरिकन प्रेशर। अमेरिका डज नॉट वांट ईरान टू ग्रो, क्योंकि ईरान, अमेरिका एंड इसराइल आर काइंड ऑफ रियल एनिमीज नाउअडेज। सो एनीवेज, ये चीपर गैस इतनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, अगर चाइना इसको ना भी ले, even then Pakistan's electrical expenses will be 1 rupee per unit। आज पाकिस्तान में पर यूनिट 40 रुपीज है। ईरान से सस्ती गैस लेते हैं तो वी कैन हैव 1 rupee per unit। आर यू गेटिंग इट?
ठीक है। तो पाकिस्तान की जो इमीडिएट एनर्जी क्राइसिस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत सारी चीजें, दैट कैन बी रिजॉल्व थ्रू दिस एज वेल। एंड अगेन, इंडिया इज अ वेरी सीरियस कैंडिडेट। वो चाहता है कि इसका एक पाइपलाइन कट जो है वो इंडिया को भी दे दिया जाए। Once India would be depending installing so many industries in its vacant areas with the cheaper gas coming from Iran, why Pakistan? So definitely ये आरसीडी हाईवे और गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट अगर सिर्फ एक्टिव हो जाता है तो ईरान and India both will be highly reliant on Pakistan. ठीक है, even Turkey will be highly reliant through RCD, and China would be highly reliant as well. So Pakistan would be more than happy and will be working as an energy hub and a transit hub. For all these four countries, with all these four countries alliance, Pakistan can really sustain and develop. Are you getting it? And it is just the beginning, what I am telling you. Uh, are there any questions? Are there any questions, Fatma, so far, whatever I've taught you so far? Beta, this is the kind of question. ऑन रिकॉर्ड मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ सिर्फ कि वी आर नॉट सिंसियर विद अवर कंट्री। इसकी डिटेल में अगर जाते हैं तो क्लास टू के रिकॉर्ड भी हो रही है और मैं आपसे रिकॉर्डिंग मंगवाऊंगा। ठीक है। तो इस पर हम सिर्फ इतना बात कर सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन एंड नॉट बीइंग सिंसियर विद अवर कंट्री। इफ आवर फॉरेन पॉलिसी वुड बी इंडिपेंडेंट ना, पाकिस्तान वुड बी, अभी तो ये बिगिनिंग है। अब जो आएगा वो आपको और ज्यादा शॉक करेगा लोकेशन पे। ठीक है। ठीक है। अब आ जाइए, थोड़ा सा पहले इस मैप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब एनिमेशन बंद कर दिए मैंने, अब हम देखें। अब आप नोटिस करें चाइना के मैप को। ठीक है। और कर रहे हैं बेटा। ये देखिए, ये हो गया। अच्छा, दिस इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लुक एट, टेक अ लुक एट द मैप। China, highly developed, so many cities and names you can see. Am I right? This is Eastern China. And look at the Western China. One, two, three, maybe four, five major cities. Oh my God, such a land piece so vacant. This China, the Eastern China, that China is developed because it is near to the sea. Rest of the China, you can see it is landlocked. No access to the sea. Am I right? So try understanding, Fatma, this little point, beta, because why is this happening? अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एनिमेशन ऑफ करके यहाँ इस तरफ आइए, मैप की तरफ। ये देखिए, ये है पैसिफिक ओशन, ये वाला जो सी है, ये जो थोड़ा सा मैं मूव करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है। इस पैसिफिक ओशन के साथ मैक्सिमम 20% चाइना लगता है। और अब नीचे से क्योंकि ये आ नहीं रहा पूरा मैप, तो मैं आपको बता सकता हूँ चाइना की जो ऑयल या ट्रेड ट्रैवलिंग है वो ये हांगकांग और इसके आसपास से शुरू होती है। इट कम्स ओवर देयर, देयर इज अ स्ट्रेट, स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट which is known as the Strait of Malacca. It crosses it, it further moves, and it further moves like this. ये पूरी इसने ऑयल की जो इंडस्ट्री है, ये है गल्फ, गल्फ का एरिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑल दी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और यहाँ से चाइना के शिप्स चलते रहते हैं एनर्जी को पूरा करने के लिए। बात समझ आ रही है? दिस इज वाई चाइना इज एक्चुअली वांटिंग पाकिस्तान टू कंटिन्यू विद द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ताकि उधर से भी एक सेफ रूट बन जाए एनर्जी का। और अगर देखो, दिस एरिया, this whole South China Sea area is dominated by the American allies like Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, Japan, and Philippines. And America's eighth fleet, अमेरिका का जो पूरा 7-8 जहाजों का पूरा एक जो फ्लीट है, दैट इज ऑल्सो देयर इन द साउथ चाइना सी। अगर ये स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक कर देते हैं तो चाइना का जो ट्रेड है 80% से भी ज्यादा डैमेज हो जाएगा। दिस इज सच अ ब्लॉकेड दैट चाइना कैन नॉट इवन बियर, बिकॉज चाइना इज लिविंग ऑन द ट्रेड। यू नो दैट ना? चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सेकंड, उसकी एनर्जी सप्लाई का रुकना भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये रूट कंटिन्यू भी रखना है चाइना ने, लेकिन चाइना को ऑल्टरनेट चाहिए। अब चाइना जिस ऑल्टरनेट की तरफ जा रहा है उसको जरा यहाँ देख ले।
Now China is willing to make a safer route. Why? पाकिस्तान यहाँ सिंकियोंग के प्रोविंस से स्टार्ट करेगा वो खंजराब से यूटिलाइजिंग दिस रूट यहाँ आकर वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा एक आएगा गवादर एक आएगा यहाँ कराची ठीक है दिस इज नोन एज द सी पैक ठीक है सीपीई सी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC. In this, China has invested about $62 billion in Pakistan. Are you getting it? Infrastructure, making bridges, making powerhouses, and many power producing projects and all. China wants to use it to utilize these support of Karachi, and this is the port, the Gwadar. Utilizing these two ports, and there is a coastal highway in between them connecting Karachi from Gwadar and Gwadar to Karachi. This project डेफिनेटली आपने वो जो एरिया अभी पीछे देखा अब मैं एनिमेशन ये डिलीट कर रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ये रूट जब आप लेके आते और यहाँ तक जब आते थे तो दैट रूट इज गोइंग टू टेक अबाउट 15 days एट टाइम 3 weeks रीचिंग द गल्फ गल्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये ईरान ओमान अरेबिया एंड ऑल दीज कंट्रीज दिस इज गल्फ ऑल राइट with Pakistan giving route from the sea pack, it will barely take 4 days. और बिल्कुल पीछे से भी अगर आ रहे हैं सॉरी बेटा माय बैड इट्स ऑल राइट ये भी समझ में आ सकता है इससे भी आ सकता है एनीवेज सो हाँ इससे स्टेट ऑफ मलाका ऑल क्लियर हो जाएगा आपको मैं एक बार इस पे बना देता हूँ इजी हो जाएगा ये देखो दिस इज हांगकांग दिस इज हांगकांग दिस इज शंघाई मेजर जो चाइना का ट्रैफिक है वो यहां से होके दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका हाउ नैरो इज दिस प्लेस ये सर्कल बनाया है मैंने राइट अगर इसको यहां से ब्लॉक कर दिया जाए और यहां भी ब्लॉक कर दिया जाए चाइना तो दिस इज व्हाई चाइना हैज मेड दिस सी फादर एंड कराची आर यू गेट with this route if you are coming there they will take about 15 days to 20 days by functioning this CPAC, China will definitely save $2 billion fuel every year. Fine? It's only the fuel that I'm talking about. Are you getting it? Okay. आप इसको एनिमेशन को खत्म करते हैं और थोड़ा सा अलग करके चलो ये देखिए now is that what China is looking for to save $2 billion? No, it wants a safer route जो पाकिस्तान से उसको मिल रहा है it will also connect it with Iran जो हम RCD हाईवे से टर्की तक का रूट मिल जाएगा अब यहाँ से हम आपको दूसरे रूट्स बना के दिखाते हैं RCD का तो हमने आपको बताया ठीक है first thing the ships or in the trucks the thing there in Gavara quickly. It will barely take 6 7 days. Normally, from China to Africa, it is a case of a month or maybe a more than a month. Like if the exit from Gwadar to Oman, it's barely 6 7 hours. Then other countries barely a day or two, maybe. And if Pakistan is going to utilize Iran through RCD highway, China's goods would reach every country of Europe and everywhere, every country they can connect via routes. If they can take a swift turn, they can use Iraq and Saudi Arabia and other belts as well. If they can take a more swift route, they can enter Jordan and Egypt, and further from Egypt, they can easily enter Libya and Africa. So just imagine Pakistan can connect how many countries, and this is only a half of it so far. Are you getting it? Or if the CPAC would have been activated, Pakistan सिर्फ अपने टोल टैक्स से चल जाएगा. टोल टैक्स क्या होता है आप बेटे लाहौर में रहते हैं शायद आपने बताया था या फैसलाबाद में इस्लामाबाद सॉरी बेटा सॉरी आई मिस दिस जस्ट इमेजिन आप इस्लामाबाद से मोटरवे पे जाते हैं टोल टैक्स पे करते हैं गाड़ी का ठीक है
So many cars, so many vehicles, so many heavy vehicles are traveling on every motorway and highway, and they are giving toll taxes. Within the country, it is an earning of quite a few hundreds of millions of rupees every day. Just imagine, अब मैं आपको थोड़ा सा करके बता रहा हूँ, ये देखें, पाकिस्तान से ऊपर मैं आपको गिनवाता हूँ अभी, ये देखिए, दिस इज अफगानिस्तान, गॉट इट, समझ आ रहा है? ठीक है, दिस इज, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, खराब हो गया, दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, दिस इज उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान एंड यूक्रेन इज क्वाइट फार, बहुत सारे कंट्रीज से कनेक्टेड है और उसका सी भी क्लोज्ड है। इवन इसको भी अगर आप चांस दे दें तो इधर भी चांस बन सकता है इस तरफ आने का। ठीक है, ये पूरा रूट है, एंड दे कैन ऑल दीज लैंडलॉक्ड कंट्रीज, इसको काउंट करें, मंगोलिया को काउंट करें, एंड रशिया एंड चाइना, देयर सी इज फार। तो अबाउट 13-14 कंट्रीज का जो शॉर्टेस्ट सी रूट है वो पाकिस्तान है। ईरान भी है लेकिन ईरान के पास समंदर छोटा है, पाकिस्तान के पास ये देखो समंदर बड़ा है। आर यू गेटिंग इट? Just imagine about, if not talking about Iran and Turkey at the moment, just these 13, 14 countries, every day, suppose kar lo, 3,000 to 5,000 trucks are coming with goods. On travelers are coming, travelers ko count nahi kar rahe. These 5,000 trucks, once they reach Gwadar and Karachi by paying so many of the toll taxes, how much money Pakistan can earn easily? Pakistani traffic ko count karo to pata nahi kahan bahag jayegi. Are you getting it? Only the toll tax can run this country efficiently. And it's not only the road and the toll tax. By the way, there will be restaurants, dhabas, gas stations, petrol pumps, और पता नहीं क्या क्या, और गवादर में पता नहीं क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो चाइना spent $62 billion and having a partnership with Pakistan for some reason. Pakistan should be activating it by 2023, but unfortunately, we weren't able to. If we would do that, यकीन मानो, there will be war that can do Pakistan. Are you getting it? ठीक है, ये अदर हाफ पूरा हो गया। अब लास्ट बेटा, जो दुश्मन भी माने, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की हमेशा से लड़ाई रहती है। मैं कहता हूं, आई एम रिपीटिंग इट बेटा, जस्ट importance is this, that which your enemies also accept. Am I right? ठीक है, अब ये देखो, दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान, ऐसा ही है। In the map, according to the geographical location and position, Pakistan is above India in the map. Agreed? Hello? एयर रूट्स, पाकिस्तान का एयर स्पेस अगर यूज करते हैं, देयर आर